Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel, Nagin Best Digital Learning App. So, dear students, today we are going to start class 10 English poem number 6, Amanda, by Robin Klein. As we have already discussed in our previous video about some stanzas and chapter reading from the book. So now, before started the third stanza, I just want to tell you what is the exact theme of the poem. The theme of Robin Klein's poem, Amanda, is childhood innocence and the challenges of maturing. The poem tells the story of a little girl named Amanda as she faces the difficulties of growing up. When when her mother expects her to behave responsibly and she desires to escape from the duties of growing up. The poem emphasizes the better to maintain the freedom and joy of childhood when adult duties start to take control. So रूबीन क्लेन की जो पोएम है ना अमांडा, एक्चुअली में जो मेन थीम है उसका चाइल्डहुड इनोसेंस कि बचपन में जो बच्चों की मासूमियत होती है एंड चैलेंजिंग ऑफ मैच्योरिंग और जो चैलेंजेस उनके सामने आते हैं उनकी समझदारी से उनके अंदर समझदारी आने से पहले। तो जो पोएम है ना वो ये बताता है अपनी स्टोरी में पॉइंट कि एक छोटी सी लड़की है अमांडा जिसको अपनी लाइफ में जब वो बड़ी होती है ना उससे पहले उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना क्योंकि उसकी मदर ना हमेशा ये चाहती है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बने एंड शी डिजायर्स टू एस्केप। वो मदर चाहती है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बने एंड अमांडा वो ये चाहती है कि वो ना इन ड्यूटीज है ना जो उसको मिल रही हैं उसको वो बच जाए वो उन ड्यूटीज से। तो जो पोएम है ना उसमें इस बात पर जोर दिया गया है द बैटल टू मेंटेन द फ्रीडम कि कैसे हम मतलब अपनी आजादी की लड़ाई को बना के रख सकते हैं एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड और एंजॉय भी कर सकते हैं अपने बचपन को व्हेन एडल्ट ड्यूटीज स्टार्ट टू टेक कंट्रोल। जब हमारी ड्यूटीज हमारे फर्ज हमें हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं ना कि जो हमें करना है वो हमें करना है। उसके बाद अपनी यूथ को अपने चाइल्डहुड को एंजॉय भी करो, अपनी फ्रीडम को मेंटेन करके भी रखो। तो Rubin Klein has expressed the view of a little girl, Amanda, who is constantly pointed out। अब यहाँ पर ना वो क्या कर रहा है, एक छोटी सी लड़की के ना फीलिंग्स को उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहा है कि वो ना मतलब हमेशा ही उसकी मदर जो है ना वो उसको पॉइंट आउट करती रहती है कि वो बहुत ज्यादा सिली सिली मिस्टेक्स करती है। तो मिस्टेक्स which she considers so as they are not part of the code of good conduct, क्योंकि उसकी मदर को लगता है कि जो गलतियां वो करती है ना वो गुड कंडक्ट में नहीं आती। मीन्स टू से उसमें जो हमारे जो जीने का तरीका है, हमारे जो बिहेवियर है या हमारे मैनर्स है वो बहुत कंडक्टफुल होनी चाहिए, मतलब विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होनी चाहिए। बट स्टिल जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना वहाँ के कुछ नियम कुछ कानून हैं कुछ एटिकेट्स हैं जो बच्चों के अंदर उस सोसाइटी में रहते हुए होने चाहिए। कुछ सोशल वैल्यूज हैं जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तो उसकी मदर उन मिस्टेक्स को ना बार बार बोल के उसको इंस्ट्रक्शंस दे के उन गलतियों को इम्प्रूव कराना चाहती है। बट अमांडा इन सब चीजों से बचना चाहती है। So the poem describes a little girl named Amanda and her mother. There are two characters in this poem. One is mother and one is the little girl Amanda. And she is first pointed most probably by her mother कि वो nails को bite करती है चबाती है and for not sitting in the right posture, और वो कभी भी ना सीधे posture के साथ नहीं बैठती। That was the main point. And so many times she thought something else, she imagined something else. Okay, so here we do have the first stanza that we have already discussed in our previous video, that just in that what is actually given, that she is always pointed out most probably by her mother
फॉर बाइटिंग हर नेल्स, कि वो अपने नेल्स को ना बाइट करती खाती है, एंड फॉर नॉट सिटिंग इन द राइट पोस्चर, कंधों को झुकाकर बिल्कुल ऊपर कुबड़ निकाल के लाइक दिस वे, वो ऐसे बैठती है। एंड द मदर आल्सो फील्स दैट अमांडा सिट्स इन अ वेरी लेजी मैनर, उनको लगता है कि ये कभी सीधी नहीं बैठती, हमेशा बहुत लेजी मैनर में बैठती है। And as we have discussed in classroom with students also, that at least leave your comfortable zone. When you are able to leave your comfortable zone, na, your interest definitely automatically will be in the study. So that was the fact. That is the fact, and that will be the fact. So instead of sitting in a very comfortable way, you just sit up straight always. So that only her mother wants to her. उसके लिए उसकी मदर वही खाती है। वो ये कहती है कि अमांडा बहुत लेजी मैनर से बैठती है, तो उसको बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। So here we can say that Amanda is always getting instructed. उसको हमेशा इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं कि नेल्स को बाइट मत करो, लेजी तरीके से बैठो नहीं। लेकिन जो उसके इंस्ट्रक्शंस है ना, वो फ्रेंडली मैनर से नहीं, एंड उस चीज को ना अमांडा समझ नहीं पा रही है। As I know, and that was true, that is true also, that for the upbringing of a child, for the upbringing of social values and etiquettes in a child, it will just only and only the responsibility of parents. And for that purpose, to fulfill that purpose, na, parents need to be strict with the child, with the children. But at least they should know why they were scolding, why they are scolding, what was the purpose, कि हम उनको क्यों डांट रहे हैं, किस लिए उनको ऐसा, उनको उनको बताना चाहिए हमें, कि उनको वो एहसास होना चाहिए कि उनको डांटा है, किस लिए डांटा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत है। We have to focus on aspects related to their upbringing, but it should be in a proper way. At least जो मैनर है, हमारी जो टोन है ना अपने बच्चों से बात करने की, that should be very sensible, and we have to control। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा ना अपने एटिकेट्स को, मॉरल वैल्यूज को सीखने की बजाय वो अपने बिहेवियर से और अपने मैनर से रूड हो जाए। So that was the challenge in front of parents, that you need to be strict, but in a limit way. How parents go to any limit to bring proper sense to their child. That was the focus of the poem. And Amanda is thus getting trained for the social society she is part of, क्योंकि अमांडा की मदर ये चाहती है कि वो जिस समाज में रहती है ना, उस समाज के जितने भी नियम कानून हैं, जो भी कस्टम्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, एटलीस्ट शी वुड नो अबाउट, उसको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ें उसके बिहेवियर में, उसके मैनर्स में होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए हमेशा उसकी मदर जो है ना, वो उसको इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, and that instruction, that feelings inside the little girl Amanda, it was very it was just the cause of irritation and frustration। अब वो ना बहुत इरिटेट हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि उसकी मदर उसको हर बात पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, वो डूज और डोंट्स, की ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। सो नाउ शी वाज completely irritated, and her mother also, because as we have observed in our lines that at the end of every line it must be there Amanda sign of exclamation, Amanda sign of exclamation, Amanda. Here we do have repetition literary device, but still we do have Amanda after each line, so it means कि अब जो उसकी मदर है ना, सीरियसली वो भी अब क्या है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ अमांडा, कि उसको बार बार छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जो है वो बार बार सिखानी पड़ रही है। ओके, नेक्स्टली in second stanza we do have that there is a languid emerald sea where the soul inhabited is me, a mermaid drifting blissfully. Okay,
So, as we have observed that now Amanda, when she was very irritated, so to this, Amanda imagines herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life in the beautiful green sea. I know that this is just a kind of threatening to the parents कि एक तरह की धमकी है पेरेंट्स के लिए कि अगर उन्होंने डांटा तो ऐसे हो जाएगा या हम अकेले रह जाएंगे या कुछ भी ऐसा होगा बट स्टिल इट वाज रियली लिटरली वेरी मच लॉस ओके सो इट्स बेटर ओके नेक्स्टली सो देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वो चाहती है कि समुंदर में मैं वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी जहाँ पर सिर्फ अकेली मैं हूँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली और बहुत ही आनंद पूर्वक अपनी सभी जिम्मेवारियों से दूर होते हुए क्योंकि वो दैट वाज द ओनली रीजन ना दैट शी वाज लिटरली वेरी अनॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि उसको हमेशा क्या किया जाता है पॉइंट आउट किया जाता है उसको हमेशा बहुत ज्यादा इरिटेट किया जाता है so it is to be noted through the above lines that uh, imagination of a little girl that she uses her imagination to escape point day to day commands of your parents. She feels literally suffocated in the real world and thus finds place in a very on created world. उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा खुद का रचा हुआ संसार है जहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलेगा जहाँ पे कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं होंगे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे सो शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी अ जॉयफुल मरमेड तो वो इमेजिन करती है खुद को कि काश मैं एक बहुत ही खुश मिजाज मरमेड होती विदाउट एनी कन्फाइज alongside soft waves of green sea कि जब भी ऐसा होता कि जो waves हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं तो I was also sailing without any restrictions. So this world of Amanda is just free. Which world? That Emerald Sea is a world for Amanda as she imagined. So and her happiness does not require any other human being. और उसकी जो happiness है वो किसी और को नहीं चाहिए सो बीइंग अ चाइल्ड मरमेड इज वेरी रिक्वायर्ड ओके फॉर अ चाइल्ड मरमेड इज जस्ट a symbol of freedom and water so when if you do have any sentence related to this that what do you understand by mermaid so we can say that according to poem mermaid is a symbol of freedom and wonder. Now, stanza number 3. Now, she was in a dream. She was completely involved in that dream. She was completely trusted on that dream. And now she had again had to take out her mother taken out of her from this level. So now further she is nagged for not cleaning her room and shoes and also for not doing her homework. अब उसकी मदर जो है ना वो उससे अब स्ट्रिक्टली हो जाती है अब वो स्ट्रिक्टली बहुत ही गुस्से से उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया डिड यू टाइडी योर रूम क्या तुमने अपने घर को समेट लिया टाइडी मीन्स होता है अरेंज करना प्रॉपर तरीके से आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें शूज को क्लीन करने के लिए भी बोला था अमांडा अगेन वी टू हैव रिपीटेशन अमांडा 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 सो इट्स बेटर day after tomorrow we will discuss okay then nextly we do have Amanda is now being asked about अब इस स्टेंजा में ना क्या है एक्चुअली जो अमांडा है उससे पूछा जा रहा है कि क्या उसका होमवर्क कंप्लीट है क्या उसने रूम को समेट लिया क्या उसने शूज क्लीन कर लिए द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेक अ शिफ्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन स्टेंजा 1 अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है जो स्टेंजा नंबर 1 में हमने पढ़े हैं कि ऑलवेज उनको उसको किस किस चीज के लिए इंस्ट्रक्टेड किया जाता है so the pattern of instructions explain that how every aspects of her
is related to questioning एंड प्रॉपर गाइडेंस. अब ये जो पैटर्न है कि जिस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उससे ये पता चलता है कि उसकी मदर ये चाहती है कि वो हर एक लेवल पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करे. शी इज बीइंग डिसिप्लिन फॉर एवरी लिटिल थिंग. वो हर चीज को लेकर, हर छोटी से छोटी चीज को लेकर प्रॉपर डिसिप्लिन हो, मेकिंग हर लूज ऑफ हर फ्रीडम, और उसकी आजादी का भी कोई भी नुकसान ना हो. मतलब वो फ्रीडम भी उसके पास जितनी उस बच्चे को चाहिए उतनी फ्रीडम भी हो, लेकिन फिर भी वो हर चीज को लेके बहुत ही डिसिप्लिन हो कि जब काम करना है तो बहुत ही डिसिप्लिन वे से करना है. एंड हर इनोसेंस इज इवेंचुअली गेटिंग लॉस्ट विद पैसेज ऑफ टाइम. और उसकी जो इनोसेंस है, मासूमियत है, इज इवेंचुअली गेटिंग लॉस्ट विद पैसेज ऑफ टाइम. उसकी जो मासूमियत है ना कहीं थोड़े से टाइम के बाद गायब हो जाएगी, गुम हो जाएगी. सो द वे दीज इंस्ट्रक्शंस आर डिलीवर्ड. लेकिन मतलब क्या है, हम ये सोच रहे हैं कि वो तो बहुत मासूम है ना, तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी तो ये मासूमियत सारी चली जाएगी. तो यही कारण है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना आर डिलीवर्ड, ये दी गई है. पॉइंट आउट द रेगुलर नेचर ऑफ दीज लेसन. ये बच्चा जो इन चीजों से सीख रहा है ना, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये उनको कितना कुछ सिखा रहे हैं. Her name being called again with an exclamation mark. Again, it was seen that if your name is there, if you do have, okay, so we can say that just after this, we do have her name being called again. उसका name दोबारा से जो है वो बोला गया. An exclamation mark, फिर से exclamation mark के साथ. The parents seem to be losing their cool and are troubled. उसके parents को लग रहा था losing their cool and are troubled, और उसको वो चीजें है ना जो परेशान कर रही हैं. Again and again our mother always instructed her for something, so literally it was very bad for us. Yes. Okay, so we can say that in stanza number 4, I am orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden and the freedom is sweet. Silence is golden. Now here we do have compared. So we can say that personification is also there, कि हमने साइलेंस को गोल्डन बताया और फ्रीडम को स्वीट बताया. ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट स्टिल वी जस्ट कंपेयर्ड इट एज अ लिविंग थिंग. ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन? आई एम एन ऑर्फन. नाउ अगेन शी इमेजिन्ड हरसेल्फ कि काश मैं अनाथ होती. रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में ऐसे ही घूम रही होती. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हर्स्ट बेयर फीट. और जो धूल और मिट्टी जो है वो जो उड़ रही है ना इधर उधर, वो नंगे पैर से मैं उसको क्या कर रही होती, मतलब नंगे पैर से उसको पैरों से समेट रही होती. द साइलेंस इज गोल्डन. वहां पे जो ये साइलेंस है ये बहुत सुनहरी है. एंड द फ्रीडम, और जो फ्रीडम है वो सच में बहुत मीठी है. तो इट वॉज जस्ट द इमेजिनेशन बाय अमांडा that in this stanza we once again see Amanda's reaction to her mother's harsh words. इस स्टेंजा में वी वंस अगेन सी, हम दोबारा से यही देखते हैं कि अमांडा का जो रिएक्शन है टू हर मदर्स हार्श वर्ड्स, कि अमांडा का जो रिएक्शन है वो कैसा है टू हर मदर्स हार्श वर्ड्स. कि उसका ना एक्चुअली इट वाज ट्रू दैट व्हाइल we do have we are needed to scold our children, so it's very important for us that we should not be used harsh words, because the reaction was literally very strange by the children also.
They learn from that reaction only. So Amanda withdraws into another imaginary world. अब अमांडा के साथ क्या होता है कि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है, जहां पर वो सिर्फ क्या कर रही है, सोच रही है कि मतलब मेरे को ना इतना कुछ सहन करना पड़ता है, तो इंस्टेड ऑफ बियरिंग ऑल दिस ना, इट्स बेटर कि हम ना क्या करें, मतलब वो ना क्या करती है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सोचती है कि जिसकी वजह से ना उसका जो ध्यान है वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाता है. So the very first line is awfully depressing, where Amanda imagines herself to be an orphan, suggesting how much frustrated she is with continuous questioning of her parents, especially her mother. So the very first line, जो पहली बिल्कुल सबसे पहली लाइन है, ये सच में बहुत डिप्रेस, मतलब यहाँ से पता चलता है कि बच्चा ना सच में कितना ज्यादा इरिटेटिंग फील करता है जब वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे बहुत रूडली, बहुत हार्शली बिहेव करते हैं. सो लिटरली शी ऑल्सो फेल्ट द सेम. तो उसको ना ये चीज बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती. तो बाय दिस वे ओनली ना, शी वॉज वेरी लिटरली शी वॉज वेरी एंग्री विद दैट कि कैसे मतलब पेरेंट्स भूल जाते हैं कुछ भी बिना सोचे समझे. सो ये ना उसको बहुत डिप्रेस्ड करती है चीजें. तो शी इमेजिन्स हरसेल्फ, कैन यू इमेजिन कि एक बच्चा इतना ज्यादा इमोशनली फील करता है अपनी उस इंसल्ट को जो पेरेंट्स बार बार उनकी करते हैं, तो बाय हर ऑन पेरेंट्स. तो हमें क्या करना चाहिए, that we know that we are the responsible person for their upbringings, but still if we just need to scold them na, so firstly let them understand that they are actually wrong at that point. Let them do first, and then you just decide whether they are wrong or not. If they are wrong, so let them understand that what actually wrong in this, which type of etiquettes they need to have in their personality. And if you scolded, अगर आप डांट रहे हो उनको किसी बात को लेकर, so you should be very much careful कि उनको अपनी गलती रियलाइज हो, instead of that they will just be in the imagination of that कि काश हम अनाथ होते, ऐसे सड़कों पे घूम रहे होते. क्योंकि वो अपनी मदर से ना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि वो रेगुलर कंटिन्यूअस उनसे इतनी क्वेश्चनिंग्स करती है, and she has no shoes on her feet, and instead she is getting them even dirtier by making designs on dusty ground with them. Literally she want कि मेरे पास शूज भी ना हो, और इंस्टेड शी इज, और इसकी बजाय ना वो चाहती है कि मतलब वो बहुत मिट्टी वाली जगह और वो अपने पैरों से ना डिजाइन बनाए. However, she makes no sound while making these dusty designs. जैसे कि शी मेक्स नो साउंड, वो कभी साउंड क्रिएट नहीं करती while making these dusty designs, मतलब आवाज नहीं करती कभी भी वो डस्टी डिजाइन बनाती है तो. बट शी चेरिश्ड द साइलेंस एज वेल एज द फ्रीडम टू डू एज शी लाइक्स दैट वर्ल्ड ऑफ हर इमेजिनेशन. वो बहुत खुश है, वो मतलब वो उस जो इमेजिनेशन कर रही है ना कि मैं अनाथ होती, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता. I know that still it is very wrong to imagine like that. But still, can you imagine कि बच्चा एक इमोशनली कितना डिप्रेस्ड है कि वो इस तरह की लाइंस जो है वो यूज कर रहा है. सो शी लाइक्स द वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड ऑफ हर इमेजिनेशन. वो मतलब उस वर्ल्ड को मतलब सच में पसंद करता है जो जिस चीज को वो इमेजिन कर रही है. अमांडा उस संसार को पसंद करती है कि मतलब कोई टोकने वाला ना हो, मतलब मेरा खुद का एक संसार हो, मैं गंदे गंदे पैर लेके कहीं भी घूमूं, कुछ भी करूं. सो हियर लव फॉर साइलेंस इज एज अ रिजल्ट ऑफ शाउटिंग एंड यीलिंग ऑफ हर पेरेंट्स. उसको लगता है कि वो ना मतलब उसको साइलेंस ज्यादा पसंद है, इंस्टेड ऑफ कि उसकी मम्मा उस पर बार बार चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं, उसको फटकारते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट ना, शी वॉज वेरी हैप्पी टू बी साइलेंट. सो दैट्स वाई हेयर इट इज रिटन दैट द साइलेंस इज गोल्डन. कि साइलेंस को क्यों चाहिए, क्योंकि अब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है अपनी मदर से, उसकी मदर का उसको बार बार डांटना, उसको धमकाना. सो शी फेल्ट वेरी लिटरली शी फेल्ट वेरी बैड. सो शी
said that silence is golden. कि कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सुनो, that is a golden moment. And freedom is sweet, और freedom होनी चाहिए. That was really very sweet. Okay, so I hope you will understand that how our parents play an important role for the upbringing, for the growing up for the children. I hope you will understand this. In next video, we will continue with the next stanza. So till then, thank you and have a nice day.